Good morning, my dear student. I'm Dr. Kiran Ramrao Borkar. Now today I'm going to discuss about the nephron, structure of nephron. This nephron is also called as a uriniferous tubule. तो हम इस नेफ्रॉन के बारे में देखेंगे. तो ये जो नेफ्रॉन है ये किससे बना है? इट कंसिस्ट ऑफ मॉल्फिजियन कॉर्पसेल्स एंड रीनल ट्यूबल. And this, look at this Malpighian corpuscles. Look at this. This one is a Malpighian corpuscles, and this Malpighian corpuscle consists of two contained. That is, this first part is the glomerulus, and another one is that the Bowman's capsule. ये बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से क्या बना है? मार्फिजियन कॉर्पसेस बना है. और दूसरा जो पार्ट है इस नेफ्रॉन का वो है रीनल ट्यूबल. ये है रीनल ट्यूबल्स. ओके, तो सबसे पहले हम मॉल्फिजियन कॉर्पसेस में नेफ्रॉन का ये जो मॉल्फिजियन बॉडी है इसमें से सबसे पहले हम ग्लोमेरुलस के बारे में बताते हैं कि ये ग्लोमेरुलस क्या है. इट इज़ अ टफ ऑफ कैपिलरीज. कैपिलरीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स anastomosing plexus of vessel and not of independent capillary loop. Blood enters the glomerulus. Look at this. इस efferent arteriole से blood अंदर आ जाता है through afferent arterioles and leaves it through the efferent arterioles. और यहाँ से efferent arteriole से बाहर भी जाता है. So glomerulus filtration takes place in this glomerulus. Okay, ये blood आएगा, यहाँ पे filtrate होगा और यहाँ से वो जाएगा. All these are occur because each kidney consists of million of nephron. And what is the function of nephron? और इस पूरे nephron का function क्या है कि formation of urine form करता है किडनी में. ओके, तो हमने ये glomerulus के बारे में बता दिया कि glomerulus is a capillaries of network. Okay, now we see now I just tell you about this Bowman's capsule. What is this Bowman's capsule? ये जो बाउल के जैसे दिख रहा है ना, इसको हम बाउमन्स कैप्सूल कहते हैं. तो ये जो बाउमन्स कैप्सूल है ये कैसा है? देखो, दिस बाउमन्स कैप्सूल इज द कप शेप स्ट्रक्चर. लुक एट दिस, कप जैसा दिख रहा है ना. एंड द ल्यूमेन ऑफ द कैप्सूल इज कंटिन्यूस विथ नैरो रीनल ट्यूबल्स. इससे रीनल ट्यूबल्स यहाँ से होती है. ओके, एंड द बाउमन्स कैप्सूल और द outer parietal layer. Look at this, outer parietal layer and inner visceral layer surround the glomerulus. glomerulus के surrounding में क्या है? ये inner visceral layer और outer parietal layer है. So the parietal layer consists of squamous cell and the visceral layer surround the glomerulus. It is composed by a spatial cell and that spatial cell is called as a podocyte. Okay, this is about the Bowman's capsule. Now, I tell you functional structure of the glomerulus membrane. तो सबसे पहला जो है it has a 3 layers. 3 layers है. यहाँ में कैसा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन और कैसा फंक्शनल क्या है स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का देखेंगे हम. सो द एंडोथेलियम इज परफोरेटेड बाय अ स्मॉल होल एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फेनेस्ट्री. एंडोथेलियम ये कैपिलरीज के अंदर रहते हैं ना, हाँ, सेल, and that is called as a fenestree. And the basement membrane is present outside the endothelium and is mainly composed of meshwork of collagen and proteoglycan fibril, and that also has a large space through which fluid can filter. यहाँ से fluid filter होगा. और तीसरा जो है वो है epithelium cell, epithelium visceral layer. Look at this, ये वाला तीसरी layer. It has a cell which are peculiar shape and which is called as a podocyte. Okay, ये 3 layer रहती है. तो podocytes are called, why it is called as a podocyte? Because the process, foot-like process, the pedicle and a space between this pedicle, यहाँ की ये जो space है उसको हम क्या कहते हैं? slit pore कहते हैं. इसको filtration slit भी कहती है. And through which glomerule filtrate filter. And the permeability of glomerular membrane is from 100 to 500 times as greater as that of the usual capillaries.
Okay, this is all about the Malpighian body. Okay, now we see the next part of the nephron, and that next part of the nephron is the renal tubule. ये देखो, तो ये renal tubule जो है, it consists of three different parts. Which one? First one is a proximal convoluted tubule, then loop of Henle and distal convoluted tubules. Okay, and then this distal convoluted tubule joins into this collecting tubule. So now I just tell you about this proximal convoluted tubule. The Bowman's capsule leads into the proximal convoluted tubule, and that is lined by a cuboidal epithelial cell bearing a brush border of tall microvilli at a free end, which increase the surface area, and the cell has numerous mitochondria near the basolateral surface, which allows the reabsorptions of salts by active transport. Okay, तो ये एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स है और यहाँ पे माइक्रोविली भी है. हाँ, ब्रश बॉर्डर टॉल माइक्रोविली जो कि सरफेस एरिया बढ़ाता है. बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी है. ओके, जो क्या करता है, विच अलाउज द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट. हाँ, रीएब्सॉर्ब करता है साल्ट. कैपिलरी से अगर सॉल्ट जा रहा है तो इसको रीएब्सॉर्ब कर देता है बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अभी हम देखेंगे कि लूप ऑफ हेनले, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूबल, दैट इज it start at the end of the proximal tubule, and its major part lies in a medulla. It consists of descending limb and ascending limb. Look at this, descending and ascending limb. And this descending limb comprises a thick segment and thin segment. The upper part of the descending limb is a thick segment that has the same diameter that of the proximal convoluted. जितनी डायमीटर proximal convoluted की है उतनी ही अपर पार्ट जो है descending limb का, उसका भी उतना ही डायमीटर है. ओके, देन it is also lined by, ये भी कैसे है, it is also lined by the cuboidal epithelium. However, its cell has a much less mitochondria compared to the cell of proximal convoluted tubule. And the distal part of the descending limb, look at this, is a thin segment and lies by the flat epithelial cell. Okay, flat epithelial cell, and which thinly scattered microvilli and very few mitochondria, presence of very few cell organelles, indicate a passive rather than active role in ionic movement occur in this lower part of this descending limb. Okay, and the ascending limb, now we see about the ascending limb, also the thin segment and the thick segment. And the thin segment form a major part of the loop of Henle. Look at this, thin segment of descending and thin segment of ascending form a major part of this loop of Henle, and the thick segment of ascending limb is lined by cuboidal epithelial cell with a short apical microvilli, and the cell has numerous mitochondria. Okay, now next part, we see next part, that is distal convoluted tubule. The thick segment, look at this, the thick segment of the ascending limb opens into the distal convoluted tubule lying in this cortex region. ये कहाँ पे था, medulla regions of the kidney में था, और ये कहाँ पे है, cortex region में है. Okay, it is a line cuboidal cell that have few small and irregular space microvilli. The term part of the distal convoluted tubule is straight and is called as a junctional tubule. Okay, and this then the distal convoluted tubule join collecting duct. कहाँ पे join होती है ये फिर, collecting duct, and this lined by a cuboidal columnar epithelial cell with a few microvilli. And in many distal convoluted tubule of the number of neurons opens into a bigger duct term as a collecting duct. बहुत सारे नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में ज्वाइन होते हैं थ्रू दिस डिस्टल कॉन्वॉल्यूटेड ट्यूबल से. ओके,
और मैंने पहले ही बता दिया है कि बहुत सारे मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं एक किडनी में, एंड ऑल दिस नेफ्रॉन्स ओपन इनटू दिस कलेक्टिंग डक्ट, एंड देन दिस कलेक्टिंग डक्ट opens into the unite to form a larger duct, and that's called the Bellini, and the latter runs through the renal papilla. Okay, this is all about the uriniferous tubule, that is Malpighian body, and renal tubule. Now I tell you about the blood supply, how the blood supply occur in this nephron. So the renal artery, look at ये जो renal artery है, that is arises from the dorsal aorta से निकलती है ये. हाँ, इन किडनी में देखो, किडनी में क्या होता है, renal artery divides into the afferent arterioles, देखो, and then the afferent arterioles enters into the Bowman's capsule, यहाँ पे आ जाता है, and to form a glomerulus, यहाँ पे glomerulus बनाता है, and efferent arterioles arise from this glomerulus, and the efferent arterioles has a narrow lumen than that of the afferent arterioles. इसकी lumen ज़्यादा बड़ी रहती है. Diameter of the afferent arterioles is greater than that of the efferent arterioles. Okay. And the efferent arterioles divides to form peritubular capillaries. देखो ये divides होती है और उसमें से क्या बन जाते हैं, peritubular capillaries. Network around proximal and distal convoluted. देखो ना, ये पूरा network proximal convoluted और distal convoluted tubules के surroundings में है. Okay, which extend parallel to the loop of Henle and collecting duct into the medulla. And vasa recta consists of descending capillaries and ascending capillaries. All capillaries network join to form a renal venule. ये सब join होता है. And to form a renal venule which join to form a renal vein. देखो ये join हो जाते हैं सब, और इसका क्या होता है, renal veins, and that opens into the inferior vena cava, जो कि किडनी से बाहर निकलती है. Okay, so the vasa, the efferent arterioles and the peritubular capillaries technically consist, ये जो efferent arterioles and ये peritubular capillaries it technically constitute a portal system. ये portal system बना देता है. ये जो हमने बताया ये क्या, how the blood supply in this nephron. Okay, अभी मैं बता रही हूँ आपको कि what is juxtaglomerulus apparatus. ये juxtaglomerulus apparatus क्या है, किससे बनता है, तो ये हम आज अभी देखेंगे. Look at this. जो juxtaglomerulus apparatus, the smooth muscle of the cell of both afferent, ये देखो ये afferent arterioles है, ये efferent, ये दोनों के जो सेल्स है, ये कौन से सेल्स, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले. ओके, ये पूरा, हाँ ये वाले, ये जो ग्रैनुल्स बोल रहे हैं ना, ये तो स्मूथ मसल सेल ऑफ द बोथ afferent and efferent arterioles are swollen and contain dark granule, और उसमें क्या रहते हैं, dark granule, and these cells are called as juxtaglomerular cells बोलते हैं इसको. ओके, glomerular cells, ठीक है. And the granules are composed mainly inactive renin. ये और ये जो granules है ये किससे बना है, inactive renin. It means that renin is the enzyme, okay, and which act as a hormone, and it is secreted by a juxtaglomerular cell. और ये कौन secrete करता है, तो juxtaglomerular cell ये secrete करता है क्या, renin, and renin is the hormones. Okay, so this renin, ये renin फिर क्या करता है, it convert the angiotensinogen, and this angiotensinogen present in blood रहता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एंजियोटेंसिन में, एंड एंजियोटेंसिन इज एक्टिव फॉर्म. ओके, एंड देन लेटर इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर. एंजियोटेंसिन जो है वो एक्टिव फॉर्म ऑल्सो स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, thus influencing the reabsorption of sodium ions by the distal convoluted tubule and that of the water through the collecting duct. Okay, this is about the what is that, juxtaglomerular cells.
अभी हम दूसरा यानी ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ग्रैनुलर सेल्स के बारे में बताया. अभी देखो द एपिथेलियल सेल ऑफ द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल. ये देखो ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये वाली मैंने ये बता दिया. अभी ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है ये वाला, हाँ यहाँ पे दिखा है. तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद एफरेंट एंड इफरेंट, देखो दैट इज कम इन कॉन्टैक्ट विद द एफरेंट एंड इफरेंट, आता है कॉन्टैक्ट में. arterioles are more dense than the other tubular cells and collectively called as a macula cell, और इसको हम क्या कहते हैं, macula cell, जो कॉन्टैक्ट में आते हैं वो. ओके. And the cell of macula densa or columnar, the cell of macula densa like close contact with the juxtaglomerular cell, contact में है बहुत close. Okay. And the cell of macula densa may function as a chemoreceptor. इसका function क्या है, act as a chemoreceptor, feeding information to the juxtaglomerular cell. The juxtaglomerular cells and macula densa together to form a juxtaglomerulus apparatus. ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, juxtaglomerulus apparatus बनाते हैं. Okay. In addition to juxtaglomerular cell and macula cells, ये जो macula cell और juxtaglomerular cell जो है, the juxtaglomerulus apparatus has a third component, and that third component is a lattice cell. And these cells are also called Rebier process that form a lace-like network. Okay, ये देखो lace-like network. And this lattice cell are located in the interval between the macusa densa and juxtaglomerulus apparatus. इन दोनों के जो बीच में है. Okay. The function of the lattice cells is unknown. इसका function unknown है. Just juxtaglomerulus apparatus is only found in juxtamedullary nephron. This is all about the juxtaglomerulus apparatus, and which is very much important for the secretion of renin. Okay, for the functioning of nephron. Okay, so it is very much important. That is juxtaglomerular complex. Okay, and which is formed by the macula densa, extraglomerular mesangial cell. It is also called as the lattice cell and granular cells. Okay, and this juxtaglomerulus apparatus only found in juxtamedullary nephron and not found in cortical nephron. जो nephron सिर्फ medullary region में है उसमें ही हमको ये juxtaglomerulus apparatus दिखता है. This is all about the structure of uriniferous tubule. Okay, thank you so much.